Good morning, my dear students. I am Sulojana Singh from SCRT Gurgaon. Today we will discuss about transmission of nerve impulse. Life on earth began with unicellular organisms. Then came multicellular organisms. With the evolution of multicellularity, it became imperative, बहुत ज़रूरी हो गया to develop a system for coordination of various cells in the body. In multicellular organisms, there are various systems, various activities inside the body. For an organism to function efficiently, there must be coordination between these systems, between these activities inside the body. For this, information has to be exchanged among cells inside the body located at a distance. Information has also to be received from outside the environment located at a distance and then transmit it to the body. For this, nature has developed two systems, nervous system and endocrine system. Today we will discuss only about nervous system. Nervous system is made up of neurons. Neurons act or function by conducting nerve impulses to the body. For convenience, we have divided nervous system into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is made up of brain and the spinal cord, and peripheral nervous system is made up of the nerves which courses between central nervous system and peripheral tissues. Central nervous system brain और spinal cord का बना हुआ है. These nerve fibers are of two types. अभी हमने क्या बात करी कि नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना हुआ है. न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. अब न्यूरॉन काम कैसे करता है? नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है. नर्व फाइबर्स आर द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स. Now, depending on the direction of propagation of nerve impulse, nerve fibers of the peripheral nervous system are of two types, afferent fibers and efferent fibers. Afferent nerve fiber transmit impulse from tissue or organs to the central nervous system. Peripheral tissues में से central nervous system को जो information लेके जाती हैं, they are known as afferent nerve fibers, and efferent nerve fibers are those nerve fibers which transmit impulses from central nervous system to the concerned peripheral tissues or organs. Now we can divide nerve fibers into two types on the basis of their function, sensory nerve fibers and motor nerve fibers. Sensory nerve fibers conduct impulses from peripheral tissues to the central nervous system to produce sensation in the brain like touch, pain, heat, cold, taste, vision and hearing. Motor nerve fiber conduct impulses from the central nervous system to muscles and glands to stimulate or inhibit their activities. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल टिश्यूज मसल्स और ग्लैंड्स को जो इम्पल्स कंडक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मोटर नर्व फाइबर्स. मोटर नर्व फाइबर हैं क्या? मोटर नर्व फाइबर्स आर द एक्सन्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स. जिस तरह से अभी हमने नर्व फाइबर्स की बात करी कि ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द इम्पल्सेज हमने उनको डिवाइड किया. इसी तरह से न्यूरॉन्स भी डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन दे आर ऑफ सेंसरी नेचर, दे आर ऑफ मोटर नेचर. अभी हम क्योंकि मोटर नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मोटर नर्व फाइबर क्या चीज हैं? दे आर एक्शंस ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स.
The nerve fiber which carry nerve impulse to eye muscles to control their movement are motor fibers. Motor nerve fibers which carry impulse to the salivary glands control their secretion. All motor neurons are efferent neurons. All sensory neurons are afferent neurons and motor neurons are efferent neurons. Other than sensory and motor nerves, there are mixed nerves also. Each nerve carries many nerve fibers. जो नर्व्स हैं वो कई नर्व फाइबर्स की बनी हुई हैं. अगर उस नर्व के अंदर सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट हैं, देन इट इज कॉल्ड ए सेंसरी नर्व. अगर नर्व के अंदर मोटर फाइबर्स प्रेजेंट हैं, देन इट इज कॉल्ड ए मोटर नर्व. लेकिन कुछ नर्व्स ऐसी हैं, दे कैरी साइमल्टेनियसली बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर नर्व फाइबर्स, यानी कि दे आर मिक्स्ड इन नेचर. So they are called mixed nerves. All nerves arising from spinal cord are mixed in nature. Now we will discuss structure of the neuron. Neuron क्या है? It is the structural and functional unit of nervous system. A neuron is a microscopic structure. ऐसे नहीं दिखाई देती हमें खुली आंखों से, माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है. इट इज मेड अप ऑफ 3 मेजर पार्ट्स: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. सेल बॉडी आल्सो नोन एज प्रोकैरियोन और सोमा. All these 3 structures, they are covered by plasma membrane. Cell body contains cytoplasm. साइटोप्लाज्म के साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, which provide energy for conduction of nerve impulse. नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. और नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स आर द मैसेजेस, इंफॉर्मेशन जो हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर से या बाहर एनवायरनमेंट में से जो इंफॉर्मेशन पिकअप करता है, तो दैट इंफॉर्मेशन इज कंडक्टेड अलोंग द नर्व फाइबर, दैट इज नोन एज नर्व इम्पल्स. तो इस कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए हमें एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी हमें सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है. And certain granular bodies called Nissl granules are also present in the cytoplasm. What are Nissl granules? What is their function? Nissl granules are rough endoplasmic reticulum. They help in the synthesis of protein. Short fibers which branch repeatedly, जो बार बार branch हो जाती हैं and project out of the cell body, they also contain Nissl granules and these short fibers are known as dendrites. यानी कि जो short fibers सेल बॉडीज में से बाहर निकल रही हैं उनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और डेंड्राइट्स के अंदर भी Nissl granules present हैं. So these fibers transmit impulses toward the cell body. That means they conduct information toward the cell body. Axon is a long fiber, the distal end of which is branched, and each branch terminates as a bulb-like structure called knob, which possesses synaptic vesicles. और इन synaptic vesicles में chemicals present हैं, they are known as neurotransmitter, which will help in the conduction of nerve impulse. The axons transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction. What is neuromuscular junction? Junction of the nerves and the muscle is known as neuromuscular junction. Now, based on the number of axons and dendrites, the neurons are divided into 3 types. First of all, multipolar with 1 axon and 2 or more dendrites. They are present in the cerebral cortex. Then there are bipolar neurons
Bipolar means two poles, one axon and one dendrite, they are present in the retina of the eye. Then unipolar, unipolar means uni means single, एक ही पोल है, यानी कि एक ही फाइबर है. सेल बॉडी विद ओनली one axon, it is present only in the embryonic stage. There are two types of axons, myelinated and non-myelinated, based on the presence of myelin sheath. अगर myelin sheath present है, then it is called myelinated neurons or myelinated nerve fibers. Myelinated nerve fibers, they are enveloped, that means they are surrounded with the Schwann cells. Schwann cell secretes myelin sheath around the axon. The gaps between two adjacent myelin sheaths are called nodes of Ranvier. ये जो myelin sheath axon के चारों तरफ बनती है, this is not continuous. There are gaps. क्या मतलब? myelin sheath axon के चारों तरफ बनी, फिर then there is gap, then again there is myelin sheath, again there is gap, again there is myelin sheath. So these gaps, they are known as nodes of Ranvier. Myelinated nerve fibers, they are present in the spinal and cranial nerves. And those nerve fibers around which myelin sheath is not present, they are known as non-myelinated nerve fibers. और neurons को बोलेंगे non-myelinated neurons. Non-myelinated nerve fibers, they are also enclosed by Schwann cells, but these Schwann cells, they do not secrete myelin sheath around the axon, and they are normally present in the autonomous and the somatic nervous systems. Now we will see it in the diagram. This is the cell body. Nucleus is present in the center. It contains Nisl granules. These are the short fibers which are branching repeatedly, known as the dendrites. Now this is the long fiber known as axon. इसके चारों तरफ ये myelin sheaths present हैं, और इन myelin sheaths के बीच में जो space है, that is known as nodes of Ranvier. Now the distal end of the axon, now it is producing branches, and these branches do not contain myelin sheath. ये जो branches हैं, इनके बीच में myelin sheath present नहीं है. The distal end of the axon produces a knob-like structure. अभी हमने बात करी थी, इसके अंदर synaptic vesicles ये present है, which contain neurotransmitter. So this is the diagram of the structure of the neuron. Now we will see how neurons function. How neurons conduct nerve impulse, यानी कि न्यूरॉन्स कैसे हमारी बॉडी के अंदर से और हमारी बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है वहाँ से किस तरह से इंफॉर्मेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुँचाते हैं. न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स. एक्साइटेबल इसलिए कहेंगे इनको क्योंकि देयर मेम्ब्रेन्स आर इन ए पोलराइज्ड स्टेट. नाउ व्हाट इज पोलराइज्ड स्टेट? व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन इज polarized? We will understand it. Different types of ion channels are present on the nerve membrane, and these ion channels, they are selectively permeable to different ions. That means when a neuron is not conducting any impulse, when neuron is resting, the axonal member is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm, as a result of which the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium and negatively charged proteins and low concentration of sodium. In contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of potassium and high concentration of sodium, and thus forms a concentration gradient. These ionic gradients across the resting membrane, they are maintained by the active transport of
ions by the sodium potassium exchange pump, which transports 3 sodium outward in exchange with 2 potassium inside the cell. As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge, while the inner surface of the axon possesses negative charge, and therefore the membrane is polarized. अभी हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि why the membrane of a neuron is polarized. तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है. हमारी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन क्यों पोलराइज्ड है? एक्सनल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज है, एक्सनल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज है. दैट्स व्हाई द मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड. So this is known as the electrical potential difference, and due to this electrical potential difference across the resting plasma membrane is known as resting potential. This resting potential is largely determined by potassium ions. यानी कि membrane जब rest पर है तब हम उसको resting potential बोलते हैं. Now we have to understand mechanism of generation of नर्व इम्पल्स. अभी तो हम बात कर रहे थे जब मेम्ब्रेन रेस्ट पर है तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि नर्व फाइबर के अंदर एक सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है जो कि आयंस को पंप करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है और उसके लिए एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है सोडियम पोटेशियम आयंस को पंप करने के लिए. नाउ व्हेन देयर इज स्टिमुलेशन, नर्व इम्पल्स कब जनरेट होगी और कब कंडक्ट होगी अलोंग द एक्सन? व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड at a site on the polarized membrane, then the permeability of the ions changes. We will talk about site A, and site A becomes freely permeable to sodium ions when it is stimulated, as a result of which there will be rapid influx of sodium ions from the outer surface of the membrane to the inner side of the membrane, as a result of which outer surface of the membrane will become negatively charged and inner side will become positively charged. पहले क्या था? अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था. अब क्योंकि मेम्ब्रेन स्टिमुलेट हो गई है तो अब अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि पोलैरिटी टोटली चेंज हो गई है. देयर इज रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट site. Now the polarity of the membrane at site A is thus reversed. हम इसको कहेंगे and the membrane is called depolarized. The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called a action potential. ये action potential is known as nerve impulse. What is action potential? जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जब वो स्टिमुलेटेड है उसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, एंड दैट एक्शन पोटेंशियल इज इन फैक्ट टर्म्ड एज ए नर्व इम्पल्स. एंड व्हाट इज नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स जो मैसेज, जो इंफॉर्मेशन सेल से, बॉडी के अंदर से और बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कन्वे करता है, जो मैसेज आता है, दैट इज नर्व इम्पल्स. एक्शन पोटेंशियल इज डिटरमिन्ड लार्जली बाय सोडियम आयंस. नाउ एट साइट्स इमीडिएटली अहेड, दैट मीन्स साइट बी, membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on the inner surface, जिसकी वजह से current will start flowing on the inner surface from site A to site B. अंदर की तरफ जो है करंट साइट A से साइट B की तरफ फ्लो करेगा और बाहर करंट साइट B से साइट A की तरफ फ्लो करेगा टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो. तो इसलिए हम कहेंगे पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स्ड and an action potential is generated at site B.
पहले एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हुआ, साइट ए पर, साइट ए की पोलैरिटी चेंज होगी। इसके बाद क्योंकि इसके सराउंडिंग्स में ही साइट बी है, साइट बी की पोलैरिटी चेंज होगी। दैट मीन्स एक्शन पोटेंशियल विच वाज जनरेटेड एट साइट ए, नाउ इट हैज अराइव्ड एट साइट बी। We will say the action potential which was generated at site A, now it has arrived at site B. We see in this diagram, this is the site A, this red portion, this is stimulated plasma membrane. So when it is stimulated, polarity was changed, it is positive from inside and negative from the outside, and outside this red area membrane is at rest. When the membrane was at rest, inside it is negative, outside it was positive charge. Now the current is flowing from site A to B. We are looking into the diagram in the inner side of the membrane, and on the outer side we see it is flowing from B to A. So in this way this circuit is completed, and action potential generated at A, it has travelled to site B. So in the same way, in the same fashion, action potential generated at site B will travel along the entire nerve fiber, and the sequence will be repeated and impulse will be conducted along the entire length of the nerve fiber. राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी, क्या मतलब है स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी का? स्टिमुलस की वजह से जो सोडियम आयन की परमिएबिलिटी में चेंज आ गया था, दैट इज शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम टाइम के लिए होता है। इट इज क्विकली फॉलोड बाय ए राइज इन परमिएबिलिटी टू पोटेशियम आयन विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ seconds. Potassium ion diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of excitation. जहाँ पर एक्साइटेशन हुई थी, जहाँ पर स्टिमुलस हुआ था मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई थी, थोड़ी ही देर में उसकी पोलैरिटी वापस आ जाती है एंड मेम्ब्रेन जो है अपना रेस्टिंग पोटेंशियल का स्टेटस वापस रीगेन कर लेती है, एंड फाइबर वंस अगेन बिकम रेस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन. इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, these ionic changes are repeated over the membrane all along the length of the fiber. क्योंकि नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स में माइलिन शीथ नहीं है, सो एक्सॉन्स कंटिन्यूस करता है, देर आर नो नोड्स ऑफ रेनवियर. तो ये जो आयनिक चेंजेस जिसकी अभी हमने बात करी, वो एंटायर लेंथ ऑफ द एक्शन के साथ कंटिन्यूस करते हैं. एक्शन पोटेंशियल जो है पूरी मेम्ब्रेन के साथ फ्लो करता है. लेकिन माइलिनेटेड फाइबर्स में जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है और दो माइलिन शीथ्स के बीच में जो गैप है जिसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं, आयनिक चेंजेस सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवियर पर होता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन आल्सो टेक्स प्लेस ओनली ऑन द नोड्स ऑफ रेनवियर, क्योंकि वहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है. माइलिन शीथ इंसुलेशन का काम करती है और वहाँ पर आयनिक एक्सचेंज नहीं हो सकता, वहाँ पर डीपोलराइजेशन नहीं हो सकती. सो एक्शन पोटेंशियल जंप करती है फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट. इस इफेक्ट को हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ nerve impulses. Because of the saltatory conduction of the nerve impulses, they don't have to run all along the myelinated nerve fiber. That is why nerve impulses, they are conducted at more fast rate in myelinated fibers than in non-myelinated fibers. तो myelinated fibers में जो रेट ऑफ कंडक्शन है नर्व इम्पल्स का, वो बहुत फास्ट हो जाता है इन कंपैरिजन टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स आल्सो डिपेंड्स ऑन डायामीटर ऑफ द फाइबर. जो थिकर नर्व फाइबर्स हैं उनमें रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज फास्टर देन द थिनर वन.
इनवर्टिब्रेट्स, स्क्वैड्स वगैरह जैसे हैं, दे पोजेस नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। तो अब नेचर ने, क्योंकि इन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स हैं एंड देयर साइज इज बिग एनिमल का, तो इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए उनकी नर्व फाइबर को थिक बनाया है। दिस इज एन अडेप्टेशन फ्रॉम द नेचर। सो दे possess thick nerve fibers for conducting impulses rapidly to distant parts like long arms of squares. How the nerve impulse is conducted through the synapses? क्योंकि हमारा नर्व इम्पल्स सिर्फ नर्व एंडिंग पे ख़त्म नहीं हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं है, सिर्फ एक नर्व नहीं है, नर्व्स आर जॉइंड। द एक्सन ऑफ ए फाइबर इज कनेक्टेड, इज साइनेप्स्ड with another axon or with dendrite or with the cell body through gaps. उस gaps को हम बोलते हैं synapse या junction. So a synapse is found by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. There are two types of synapses, electrical synapses and chemical synapses. At electrical synapses, the membranes of pre and postsynaptic neurons are in close contact, and electric current can flow directly from one neuron into other through these synapses. Transmission of impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon. जैसे एक सिंगल एक्सन में इम्पल्स कंडक्ट हो रही थी, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में अलोंग द साइनेप्स इम्पल्स कंडक्ट होती है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन ए केमिकल साइनेप्स, बट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स दे आर वेरी रेयर इन आवर सिस्टम। एट ए केमिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक neurons, they are separated by a fluid filled space called synaptic cleft. प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, उसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। अब हमने क्या अंडरस्टैंड करना है, हाउ द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स अक्रॉस द synaptic cleft to the postsynaptic neuron. Presynaptic neuron से impulse postsynaptic neuron तक synaptic cleft को क्रॉस करते हुए कैसे जाएगी, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है कैसे ट्रेवल करेगा प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन तक। Chemicals called neurotransmitters, they are involved in the transmission of impulses at these synapses. Nerve endings or axon terminals, they contain vesicles which are filled with these neurotransmitters. These neurotransmitters may be adrenaline or they may be acetylcholine. When an impulse or action potential arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane. Synaptic vesicles की मूवमेंट प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ हो जाती है एंड देन इट फ्यूजेज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीजेज द neurotransmitter in the synaptic cleft. Now you see in this diagram, this is the axon terminal which is producing this knob-like structure. In this knob-like structures are present synaptic vesicle. This synaptic vesicle contains neurotransmitter. Now when impulse is conducted from the nerve terminal to the synaptic knob, this synaptic vesicle will fuse with the plasma membrane and will release the neurotransmitter present in the synaptic vesicle in the synaptic
cleft. These neurotransmitters which are released in the synaptic cleft, then they will bind with the receptors present on the postsynaptic membrane. In the peripheral tissues, action of a motor neuron terminates on either a muscle fiber or a gland cell. If it terminates on a muscle fiber, then a specialized structure called motor end plate occurs at the neuromuscular junction. Nerve impulses are transmitted across this junction from axon terminal to the muscle fiber. So, this is all about today's lecture. Thank you.